So, hello students, we are starting now the fourth part of our Vision Monthly magazine of August month. Okay, we have already completed environment, economy, art and culture, science and technology. Now we will see security, IR, and places in news part also. Okay, I'll go directly to international relations. Fair representative global order. Okay, India's external मिनिस्ट्री हैज़ कॉल फॉर ग्लोबल ऑर्डर इन अ बिम्स्टेक. ओके, बिम्स्टेक कंट्री जो होती है उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल था. वहाँ पे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने फेयर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल ऑर्डर का ये सामने रखा है. उन्होंने बोला है मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन उनको कहाँ पे चाहिए. जो ग्लोबल ये होता है ना, जैसे यूएन की सब बॉडीज़ हो गए या फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज़ चलती है उसमें सभी कंट्रीज़ का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कि बहुत सालों से इंडिया का कहना है. क्योंकि जो 5 बिग कंट्रीज़ है ना, बिग इकोनॉमी, जो कि स्टार्टिंग से जिनके पास में वीटो पावर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल्स में, उन्हीं के पास में मोस्टली ज़्यादा पावर्स होती है. स्पेसिफिकली यूएसए, देन यूके, फ्रांस, जर्मनी, दिस टाइप ऑफ कंट्रीज, एंड रशिया एंड चाइना. ये 5 अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन by these 5 countries, China, France, Russia, UK and USA. These hold permanent status and veto power and disproportion and influencing United Nations Security Council. Yeah, United Security Council is one of the most important body that exists. This is a permanent body of United Nation, and India want a permanent membership of that body. Sidelining the non-permanent member. Yeah, those are non-permanent member like India and a lot of countries, all countries except these 5, they do just side corner us. They don't give that much importance to our demand or whatever we have said there. Marginalization of global south. यस, ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब कि जो इक्वेटर के नीचे जितने कंट्रीज आता है उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है. इक्वेटर के ऊपर वाली कंट्रीज को ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है. दिस इज अ परसेप्शन दैट ग्लोबल नॉर्थ इज मोर डेवलप्ड देन द ग्लोबल साउथ. And this is right also because all these 5 countries belongs to the global north, and the South African and African continent, South American continent, and Asia Pacific, these all belongs to the southern, which are less developed except Russia, except Australia. Australia is considered as the northern country while its geographical location is southern. 9 times more voting power at IMF. Yeah, suppose US have 16.49% of vote in IMF, only one specific country, and which have 4% of population, but 4 times it have more voting right than its population, because it gave more funds to IMF, it have more power in IMF, their officers and all. It's controlled by and established by USA only. Okay, 4.2% of world population. Effective multilateralism. If a lot of countries are going there, then multilateralism will increase. Otherwise bilateralism or unilateralism will stay there if 1 or 2 or 4 5 countries only control that. What is global order or world power? Global order or world power is at the international level where all countries meet. Which country have more power, which can give decision and manipulate anything because they have better economy or they have a good standard of a role. Okay, global order is controlled by Russia and USA before Cold War era, and after that US is controlling. Now China and US is controlling. So like that order can change according to the which country is getting more economically powerful, not only economically, military, their industries, in all aspects. United States is set to officially withdraw from the under the Trump, they want to get out of the WHO, World Health Organization, and Paris Climate Agreement. They don't want to comply with these environmental friendly agreements.
The reason is very other thing. We'll not go there. Trade as an instrument in geopolitical power. Yeah, you had seen the USA imposed tariff on us. It's just a one kind of punishment which he is doing, or we can say geopolitical instrument to give someone economically backlash, which they uses 25% of tariff on all imported goods in India. Obviously now it's going 50 also. Climate change inequities. Yeah, these countries which I said, the 5 countries, these are developed a lot before us. Like in last century they had developed and they had emission a lot of carbon, and that carbon is now present in atmosphere and we are facing the consequences. Those country who was not developed at that time and now we are developing. Now these all the agreements, climate change, then World Health Organization, Paris agreements, they all are applying on us. Like you have to take the responsibility to do minimal carbon emission, but what they had did in the last century, they had emitted a lot of carbon. That's why we are facing the problems right now. Okay, the from 1 degree our temperature has rise, climate change issues, glaciers are melting, a lot of this heat wave problem. Example, write this example notes I had told you in earlier video. Make page and write this: Philippines face an extreme heat wave cause drought and heat related deaths. Use this in mains answer writing. Industrialized country like USA, 20% of historical emission. They had did a lot of emission in history, and now they are pretending like we are the one who's doing emission because we are using coal for our economic advancement. 100 companies, mostly in USA and China, are behind 40% of world's private investment in research and yeah, they are behind of this. जो 100 कंट्रीज थे ना, मतलब कि पहले की जो बड़े बड़े देश की बड़ी बड़ी कंपनी है वही सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रही है. जितने भी अभी टेक्नोलॉजीज आ रही है, ओनली दिस कंपनीज आर डूइंग. व्हाट अदर कंपनीज आर डूइंग देन? दे आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट हैव इन्वेंटेड and they are just producing it. Okay, we want India to innovate also. That's why we are giving more budget to research and development. We want there are some innovation and some patents, some copyrights on our name too. Technology and Innovation Report 2025 claim this 100% of company, 100 companies give the 40% of innovations, and these all are the private, world's private investment. Okay, multilateral reforms. ये जो G4 countries है ना, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, they want a permanent seat in United Nations Security Council. From a lot of years they are trying to do so, but there is again one counter group against these 4. They want them to become a permanent member in the Security Council. Initiative like Voice of the Global South Summit. Yeah, India had taken one initiative in G20 meeting which was held in India in 2023. That time African Union was added in G20. That was the biggest voice for Global South. Okay, whole African nation got one permanent place in G20 meeting. Implement Rio de Janeiro Declaration, 17th BRIC Summit, advocate AI governance and realignment of IMF code and better reflect current global realities and sovereign. Okay, रियो जो डिक्लेरेशन था एजेंडा 21, उसका इम्प्लीमेंटेशन. क्लाइमेट जस्टिस, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Fine, if you can skip these 2 points, these are not so attractive. In mains paper you have to write 4 to 5 points. Fair global order and need inclusive institution, equitable finance and balance north and south cooperation. Yeah, use this balance north and south cooperation in your mains answer. With emerging power like India bridging gaps for a just and effective world system. Okay, India's strategy in Indian Ocean. Why Indian Ocean? Indian Ocean is one of the largest ocean after Pacific and Atlantic. It's third, yeah, this given here, third largest ocean
1/3 of the world population host this. जो पार्लियामेंट्री कमिटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, दे हैव प्रेजेंटेड वन रिपोर्ट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एंड इंडियाज इंडियन ओशियन स्ट्रैटेजी इन लोकसभा. ओके, हमारा 90% ऑफ ट्रेड यही से होता है, एंड 2/3 ऑफ मीन्स मोर देन हाफ शिप्स कंसिडर्ड 75% ऑफ शिप्स ट्रैवल फ्रॉम दिस दोज ऑयल शिपमेंट्स. जो कार्गोज होते हैं ना, जो कि क्रूड ऑयल लेके जाते हैं, वो यही से ट्रैवल करते हैं from this transit route. India had 2.4 million square kilometer of exclusive economic zone. Exclusive economic zone क्या होता है कि जहाँ पे रहते नहीं है लोग, that is used for trade and for economic advancement. वहाँ पे सिर्फ businesses and पैसे कमाने की चीज़ें होती है. Specifically dedicated region होता है वो for businesses. Indian Ocean region है. सो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और चलती है इन इंडियन ओशियन, एंड व्हाट एडवांसमेंट वी विल डू. मे बी दे हैव गिवन challenges, they have given way forward, they have given no means way forward we have separated from that. Strategic partnership, yeah, India is making a lot of country as their partner from Asia Pacific, and then rim countries, you know, no, the rim countries which are connected through the Indian Ocean. Some countries of this Africa, some countries of southern Asia, what we called it like Bangladesh, India, except Pakistan and Myanmar, all countries which connected to Indian Ocean. Thailand too. Net security provider. India will provide security in the Indian Ocean. Obviously, we have our great army and navy. Maritime terrorism and maritime criminal activities, all the illegal that grey ships and black shipping. Combat illegal fishing also. What is this IUU? Okay, we will Google it. Piracy operations. A lot of illegal activities happen there. Illegal that exploitation of animals and all. That also happened. Drugs, cartels, everything happened through the sea route. Engaging with littoral states. What is the littoral states? Those states which are connected to the water body, river, ocean, or any kind of water body. You name the water body, those have water connection with them. Ships can come and go there. India has fostered bilateral partnership with littoral states such as Mauritius, Maldives, Sri Lanka, and Seychelles. These are all the countries which have good relation with India, and they all are oceanic countries. Oceanic country means countries those have ocean or those have connected sea with them. Developmental Assistance and Capacity Building Program, HADA, Human Assistant Developmental something. I don't know what's the full form of this. Defense, maritime security, and core pillar are the core pillar of this partnership. Okay, this partnership we have done for defense, means our army and all, navy, maritime security, okay, and regional leadership. Obviously, India is one of the leader in this region. Indian Ocean Commission, Indian Ocean Rim Association. These association where the India have leadership. India is leader in this association, and all the remaining countries of rim countries, they are the partners. Infrastructure and connectivity. India has been investing in the developmental ports such as Chabahar port across the Indian Ocean, such as Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, to enhance the connectivity and strategic presence. Sagarmala 2.0, India's flagship initiative to enhance the port and connectivity develop inland waterway to promote industrial growth, to further enhance India's maritime cooperative. Okay, Sagarmala 2.0, this is also important. Sagarmala is always an important thing for us. Humanitarian assistance, first responder, whatever happened there, plane crash, ship crash, or oil spillage, India will be the first responder. We will go there and help that cargo or ship, whatever happened, such as typhoon Yagi आया था. कहाँ पे आया था ये टाइफून यागी? म्यांमार.
म्यांमार में आया था. देन द ऑपरेशन संभव हेल्ड बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स. वी गेव medical and relief, disaster relief material to them, humanitarian assistance. This is that. This RIM organization, these all are important, but we have to read this separately in IR part. Okay, this is syllabus of IR. Challenges, geopolitical challenges, presence of extra regional, near that Diego Garcia Island there, USA and UK have presence, and France also. So geopolitical thing, that is like a threat to us. We don't want that countries to present in our region. Island states, hedging between the partnership, steady economy and security. Okay, China is biggest threat in ocean, always it have been. Maritime security, region faces the piracy, terrorism, illegal and unreported, unregulated fishing, drug trafficking, smuggling. These are all the issues related ocean and oceanic countries. Infrastructure related connectivity gap, including Sri Lanka, Maldives, Mauritius, Seychelles faces infrastructural and financial limitation. Yeah, these countries are always been facing some economical issues. These have some reason. Tolerant strategic. Okay, way forward. It's not feeling so eye-catchy or attractive if you write this. Avoid writing big terms in way forward. Keep it very simple, 1 or 2 sentences or 2-3 keywords only in way forward. Don't give this much of key for like big of way forward. Role of Indian Navy. Okay, conclusion, fostering regional cooperation. Again, why they put such only keywords? There is no sentence, they only put keywords in all the conclusion. You just to take some good words, whatever you feel like, and only use those. Okay, don't run for such a big and complicated conclusions should be the very specific and simple and up to point. Whatever the ask, and you have fulfilled the all need in your answer, and now conclude it with. We don't have to give summary of all answer what you written. Association of Southeast Asian nation centrally. Okay, ASEAN countries is undergoing the great strain, great trade tension and shifting order. I will save my screen recording, otherwise it will get deleted again, then I have to face issues. Okay, so Association of Southeast Asian nation centrally. What is this? In Southeast Asia there is a lot of rivalry going in that region because of China. There is a lot of fights going on for the these island nations. Which island belongs to which nation, like Philippines and China is fighting over, Vietnam and China is fighting over some, then Myanmar, Thailand, they have a lot of fights going on there, and shifting order require bold reform. Okay, they need bold reform to solve all this, because the presence of China, they are facing a lot of issues, and all these nations have rivalries and trade tensions. ASEAN कब बना था ASEAN? 1967. रिमेंबर इट लाइक दिस, आफ्टर आवर इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, उसके 20 साल बाद में ASEAN बना था, या फिर दिल्ली बना था 1969 में, उसके 2 साल पहले नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके 2 साल पहले ASEAN बना था. कीप इन माइंड लाइक दैट. बैंकॉक थाईलैंड में बना था ये. एंड एम, व्हाट्स इज एम? द रीजनल इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस, promote peace, stability in the region and rule of law. There should not be despotic, any country should behave like that, like the China is behaving right now. Okay, secretariat is in Indonesia, Jakarta. 10 countries are the member. India is not the member of ASEAN, but India deals with ASEAN with the FTA, free trade agreement. Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, these are the founding members, and other are the they joined later. Highest policy making body. Okay, this is the highest policy making body in this region. Under this there are a lot of small organizations and summits, they are doing work also. Head of the state and government of ASEAN. Okay, fine. आर्टिकल 1.15 जो ASEAN चार्टर क्या होता है? रूल बुक होती है. ठीक है, ASEAN का जो चार्टर है वो एम्फोसिस करता है ऑन द upholding centrality and active role of ASEAN in the main driving force behind the relation and cooperation with the external partners.
अच्छे से कॉपरेट करना इकोनॉमी के लिए, कॉपरेट करना। उनका जो एक्सटर्नल पार्टनर मीन्स हम लोग जो आशियन कंट्रीज में नहीं है, अदर कंट्रीज, cooperation with them and compliance with them and do growth, centrality and active role. Relevance, yeah, it's a highly relevant, we agree. Security, stability in the region, ASEAN regional forum, ASEAN defense ministers meeting plus ASEAN provide space for defense, maritime security dialogue involving both members and externals are we. Economic integration, obviously they are doing all this to enhance their economy. Whatever happen, whichever the group become, all the intention is to get more economy. Economy will give you power, economy will give you security, it will give you technology. Everything starts from economy. So everyone have intention to increase their economy first. With money everything can be possible, so keep in mind like that. Norm building, okay. Some treaties are the Treaty of Amity and Cooperation, and South Asian states have involved in the regional key cooperation. Major powers like China, US, Russia also becoming signatories. Okay, some other countries like big countries, those are also becoming signatory in this organization. They are also joining the organization, but not as a member, as an external member. Means we are working with them, not joining them. Great power rivalry. US and China competition affect ASEAN also. India China competition also affect this ASEAN, but now the India and China competition is more like cooperation. Things are changing. US tariff have affected overlapping regional architecture. What is this? Okay, Quad and AUKUS. Quad, we 4 countries: Australia, UAE, USA, India. But AUKUS is Australia, UK, USA, these 3 countries. So these ASEAN countries are also like a little bit of confused, like we have to go for Quad or AUKUS. Okay, in one region there are two organizations: ASEAN led security mechanism, East Asia Summit, and ADAM plus. इंटरनल डिवीजन, या इंटरनल डिवीजन में भी है इनमें, मतलब कि अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चलती है. वियतनाम पुट स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन आसियान टू कंफर्ट चाइना. जैसे चाइना और वियतनाम का बहुत सालों से सम आइलैंड इज देयर यार, जस्ट बिसाइड वियतनाम देयर इज वन आइलैंड, and China claims that, and that's why China and Vietnam have conflict. But other countries don't have that much conflict with China other than Philippines and Vietnam. So what Vietnam do, it just forces everyone to comfort China. Whereas Cambodia along with Laos have also increasing dependency. Cambodia and Laos don't want to blame China for anything because they have infrastructure loan. Like China have given loan to Pakistan, they have given to Cambodia and Laos also, because they are the connected states, connected countries, sorry. Credibility crisis, oh no. Myanmar crisis, we have seen whole countries getting despotic rule, allowing external power to step in the 5-point consensus. ASEAN has struggled to enforce the इन्हीं के बीच में यहाँ पे टेंशन चल रही कि 5-point कंसेंसस को लागू करना है या नहीं, बिकॉज अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर एक्सटर्नल पावर्स जो है जैसे कि रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, ये इन सबको परमिशन मिल जाएगी अंदर आने की. दैट दे डोंट वांट, बट सम कंट्रीज वांट, सम डोंट वांट. अगेन देयर इज क्राइसिस. ASEAN secretary limited resource curtail ambitious initiative. Upgrade ASEAN. Okay, way forward. क्या करना चाहिए? आसियान को अपग्रेड करना चाहिए, कॉपरेट विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स लाइक EU, अफ्रीकन यूनियन. ओके, फॉर्मल कंसल्टेशन मैकेनिज्म, जैसे क्वाड की जैसे ग्रुपिंग है वैसे ग्रुपिंग इन्होंने करनी. नो, दिस इज नॉट द गुड थिंग टू से देयर. दे ऑलरेडी हैव वन ग्रुप एंड वी आर आस्किंग देम टू डू मोर ग्रुपिंग. It will create divide and rule between the group and groups. So that's not the good ideal point. Again, how to deal with shift of ASEAN centrally. How can India deal? In our syllabus you will read this properly, not here. Conclusion.
Okay, shorts in news. India Philippines strategic partnership. इंडिया फिलीपींस की जो पार्टनरशिप है ना, उसको अभी 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, जिसके टाइम पे उनके some PM visited India. Okay, and to whom he meted and what they did, we should know that. Some president name is like Marcos, their president. He visited India, meted PM. एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014. लुक ईस्ट पॉलिसी तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, जो कि हमने ट्रांसफर करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी. एंड वी हैव सेल अ लॉट ऑफ दिस defense instruments to Philippines. BrahMos we have sold to Philippines. Informally elevate the bilateral ties and strategic partnership guided by. And why we are doing this? To increase our presence is ASEAN region. Okay, we want all countries to have a good relation with us. Bilateral trade कितना है ये, this data, write this data. It's useful in प्रीलिम्स ऑप्शंस. ओके, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें थोड़े काम में आ जाते हैं. और अदरवाइज लाइक अ सॉल्ट यू कैन ऐड दिस इन योर मेंस आंसर ऑल्सो. डिफेंस पार्टनरशिप, ब्रह्मोस, लुक आई सेड ब्रह्मोस. फर्स्ट फॉरेन बायर हमारे ब्रह्मोस का $, 375 million $. China factor. Philippines also have problem with China, like China's assertiveness in South China Sea. And search one this island name, on which island Philippines and China is fighting. Okay, that island is just besides the Philippines and very far from China, but still China is claiming that it's in South China Sea. Just see the name and write down the name. India Pacific region. India's Act East policy and Indo-Pacific outreach have Philippines as a key player. Yeah, India Pacific region. UN India Globally Capacity Building Initiative. India launches project. India ने project launch किया है for what? Initiative for Global Capacity Building. जो भी एशिया की कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, कैरिबियन कंट्रीज है. कैरिबियन कंट्री कौन सी है? जो कि कैरिबियन सी है ना, यूएस के फ्लोरिडा के थोड़ा नीचे, बिसाइड्स द मेक्सिको. दैट रीजन इज कैरिबियन रीजन, कैरिबियन सी, and that are Caribbean countries. Very small countries are those. And United Nations jointly launch mostly country and country, like bilateral countries. दो countries मिलके कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कंट्री और एक इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन ने मिलके और इंडिया ने मिलके ये लॉन्च किया है. ओके, शेयर इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपर्टीज विद साउथ नेशन. हमने जो अचीव करा है, हमारे जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, वो हमने वहाँ पे शेयर करी है, ताकि अदर कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम अस द सोलर एंड विंड वॉट एवर वी आर डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए. इम्प्लीमेंट थ्रू द न्यू UN इंडिया सस्टेनेबल गोल्स कंट्री फंड एज वेल एज इंडियाज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम. ओके, nice points. Implemented through यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. यूरेशिया रीजन कौन सा होता है? जहाँ पे यूरोप और रशिया जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे कुछ कंट्रीज है विच वॉज द पार्ट ऑफ USSR अर्लियर. दोज रीजन इज द यूरेशिया नाउ. ओके, सो वहाँ पे इंडिया एंड यूरेशिया इकोनॉमिक साइंड ओके ट्रेड डील करा है. इंडिया एंड यूरेशिया ने FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड कॉपरेशन. फाइन. इकोनॉमिक बेनिफिट कौन सा है? ट्रेड एक्सपांड होगा. और वैसे भी ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दिस 5 countries, they have make one deal in last maybe in economy August month, Vision Monthly magazine. Read one news is there about these 5 countries has made something about landlocked nations they are, no? So they are facing problems in trade and economic advancement and infrastructure. So they have created one group for that specific. It will unlock untapped trade, increase investment obviously, and strong partnership will increase.
दिस इज डेटा, यू कैन राइट दिस डेटा कि अब तक के बायोलैटरल ट्रेड हमारा कितना है, $69 बिलियन 2024 तक के, और जो कि 2013 से 7% से बढ़ गया है, मतलब वी आर हैविंग पॉजिटिव ग्रोथ. मार्केट एक्सेस, वी विल गेट द मार्केट एक्सेस, लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे वहाँ पे. इंक्रीजिंग यूएस टैरिफ, क्योंकि यूएस में तो नहीं कर पा रहे तो हम आशियन नो, यूरेशियन कंट्रीज में कर लेंगे. ठीक है, अगर वहाँ का बंद हो तो कहीं का तो सोर्स चालू होना चाहिए. एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, yes, strengthen India's position against non-market economy. India's presence will increase in Eurasia region. Right now we don't have that much presence in Eurasia. We have in ASEAN region, and we have in a little bit of European, because with Germany and with USA we are having right now. In South African region we have presence. Energy partnership. Russia now account for 35 to 40% of India's total oil export. Energy means oil, crude oil, whatever we are buying. Strategic benefit. Russia-led bloc will enforce Indian policy as a multi-alignment. Strengthening ties. Overall, it's an international organization for regional economic integration, Genesis, established by the Treaty on the Eurasian Economic Union. Okay, ट्रीटी 2024 की, फॉर कॉपरेशन विथ यूरेशियन रीजन. एफटीए, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, लेबर्स. ठीक है. इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी. रशिया ने एक जो ट्रीटी थी उनकी यूएस के साथ में, उसको ख़त्म कर दिया. ये 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो थी यूएस के साथ में, दिस हैव एंड द कमिटमेंट यूएस ऑर्डर फॉर रिपोजिशन ऑफ 2 न्यूक्लियर. ओके, हाँ, क्यों एंड करी? क्योंकि जो फिलीपींस का ये है, फिलीपींस का रीजन है, वहाँ पे इन्होंने 2 मिसाइल्स ये करी है, व्हाट वी कॉल डिप्लॉय करी है, एंड विच रशिया डिड नॉट लाइक दिस डिसीजन. टाइफून मिसाइल सिस्टम फिलीपींस में उन्होंने सेट कर दिए हैं, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं. That's why Russia have officially ended this treaty. When this treaty was signed, we will see the historical background. 1987 में हुई थी सोवियत यूनियन, क्योंकि तब तो यूएसएसआर था, तो सोवियत यूनियन के साथ में हुई थी. ट्रीटी रिक्वायर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ग्राउंड लॉन्चेस, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल विद द रेंज ऑफ 500. ठीक है, ट्रीटी को बाद में अच्छे से पढ़ लेना आईआर के सिलेबस में. इट वॉज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट टू रिड्यूस न्यूक्लियर. ओके, क्योंकि तब न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे थे, तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रीटी टू रिड्यूस द यूज ऑफ न्यूक्लियर एंड आर्सेनल्स. रिमूव एन एंटायर क्लास ऑफ वेपन. ओके, पूरा वेपन का क्लास ही ये करना था, निकाल देना था. अलाउ ऑनसाइट इंस्पेक्शन ऑफ फॉर वेरिफिकेशन. ओके, INF ट्रीटी हैव ऑलरेडी वीकेंड आफ्टर द यूएस विड्रॉवल. यूएस ने विड्रॉ कर लिया था 2019 में ही. फाइन, तो फिर ये ट्रीटी वैसे भी वीक हो ही गई थी, क्योंकि यूएसए हैड ऑलरेडी विड्रॉ. इम्प्लीकेशन ऑन न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल, वही सब है कि न्यूक्लियर के चीज़ों को कम करने के लिए क्या क्या हुआ था. दिस ट्रीटी, ऑल दिस ट्रीटीज आर इंपॉर्टेंट, एंड वी विल सी दिस इन आवर सिलेबस प्रॉपरली इन डेप्थ. ओके, the key nuclear arm control agreements, these all agreements, when it started, these are all the historical region of international relations syllabus. अर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट. ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है कि डील हुई है, एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस 2 कंट्रीज. दिस, इन कंट्री का बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बता देती हूँ. जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का चलते रहता है ना कश्मीर के रीजन के लिए, सेम इनका चलता है नगोर्नो काराबाग के रीजन के लिए. हियर इज अ कंट्री ऑफ अर्मेनिया, here is the Nagorno-Karabakh region, and here is Azerbaijan. Azerbaijan is Muslim dominated country which is supported by Turkey. Turkey and Pakistan Armenia को support करता है, and Armenia and India have good relation, and Armenia is a Christian country which is famous for coffee. And Armenia claims the Nagorno-Karabakh and Azerbaijan claims the Nagorno-Karabakh. Okay, and this Azerbaijan region have its territory divided into 2 parts, like we used to have East Pakistan and West Pakistan.
Besides the part of Armenia, there is one Azerbaijan territory. Okay, so they are making one route which will go from Azerbaijan to Armenia to that East Pakistan, what we will call it Nakhchivan. Nakhchivan name is there, very difficult name. So they are creating trip. Trip is the name of this route. Route ek rasta. Trump route for international peace and prosperity. They are making this route which will link Azerbaijan from Armenia to Nakhchivan. US have exclusive development right. US will develop this, and US have all the right related to this route. US cooperation deal, cooperation in energy, technology and economy. Fine. Background, this is all the background. You will read, pause this video and read this properly. When what happened, they are also having wars between them from lot of years. Armenia is the only country in the region which it has the Friendship and Cooperation Treaty signed in 1995. Azerbaijan falls into international north and south transport corridor route connecting India with the Russia through Central Alaska. Okay, Central Asia. इनको कॉकेशियन कंट्रीज कहा जाता है. वाई कॉकेशियन? देर इज 3 कॉकेशियन कंट्रीज, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान. देर इज जैसे हिमालय के से रेंज है, पूरी पहाड़ की रेंज है, लाइक दैट देर इज कॉकेशियन रेंज. दोज माउंटेन्स आर कॉल्ड कॉकेशियन माउंटेन. दैट्स वाई दिस कंट्रीज आर कॉकेशियन कंट्रीज. And these have Muslim and this Christian culture mix of them, because they connected to Middle East region also, and the Europe also. That's why they have the mixed culture. Alaska summit. What was this Alaska summit? The president of USA and Russia, Putin and Trump, both met in Alaska. Alaska is the territory of USA which is not connected to USA. इधर यूएसए है, बीच में कनाडा है, उसके ऊपर में अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है, जो कि बहुत पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, रशिया का. बट रशिया हैव सेल दिस टू यूएसए. रिगार्डिंग सीज फायर, इन्होंने मीटिंग क्यों करी थी? सीज फायर रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया वॉर. फाइन. दिस इज अबाउट अलास्का, व्हाट आई जस्ट सेड. अलास्का ट्रीटी 1867 में रशिया ने ये दे दिया था यूएसएसआर को, बेच दिया था. बफर्ड सी, आर्टिक ओशियन एंड बेरिंग सी जो है, वहाँ से ये अलग होता है. इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ना, वहाँ से. अलास्का सेपरेटेड टू यूएसए एंड रिमेनिंग इज ये रशिया. गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पे प्रेजेंट. पैसिफिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है ऊपर में. बेरिंग सी कहाँ पे है? इन द पैसिफिक ओशियन. चुचिक सी जो कि है रशिया के ऊपर में. The northern lights of Aurora Borealis, Aurora Australis. Australis दिखता है साउथ में, सदर्न पोल पे, और बोरियोलिस दिखता है नॉर्थ पोल पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे ये ऑरोरास दिखते हैं. ऑरोरा आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंस. इन मेंस देयर आर कंटिन्यूस क्वेश्चन आई एम सीइंग अबाउट ऑरोरा इन जियोग्राफी रीजन, जियोग्राफी सब्जेक्ट. सॉरी. 1/3 of the state lies within the Arctic Circle. About 85% of Alaska is underlined by permafrost. मतलब वहाँ पे बर्फी जमी रहती है, वो वहाँ पे कोई रहता नहीं है. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. चेयरमैन इंडिया हैज़ बीन, ये जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, उसके जो चेयरमैन है वो इंडिया चूज हुए हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं. कहाँ पे हुई है ये कॉन्फ्रेंस? इन थाईलैंड. 1977 में फाउंड हुआ था. यूनेस्को AIBD इज अ यूनिक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल, या इसमें बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स है. कुआलालंपुर, म्यांमार, सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे. To achieve vibrant and cohesive electronic media environment in the Asia Pacific region, media should thrive properly. 92 countries इसके members है. Organization from 45, जब चालू हुई थी तो 45 थी, अभी 92 है. इतना डिटेल में तो ध्यान में नहीं रखना होता है. जो प्रसार भारती इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट है, वो भी इसी के अंडर ये होता है, गवर्न होता है. इंडिया फाउंडिंग मेंबर था इसका, वन ऑफ द.
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट यू विल कोऑर्डिनेट विद दिस. एरियाज इन न्यूज़. गाजा वॉर तो रुक गई बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे फमाइन डिक्लेयर हुई है, खाने के लिए नहीं है, भूखमरी फैल गई है, 500,000 पीपल वहाँ पे भूखे मर रहे हैं. इसराइल प्रोलॉन्ग ब्लॉकेड, क्योंकि इसराइल ने वहाँ पे ब्लॉक करके रखा है, इसलिए वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स नहीं पहुँच पा रहे. पोस्ट हमास अटैक, ओके ठीक है. कहाँ पे है देख लेना. ये है रफ़ा, ये है खान यूनिस, देर अल बाब, देन जबल अली. मैप्स देखते देखते मैप देख देख के लर्न कर लेना, ठीक है. सूडान में बहुत दिन से ये चल रहा है, क्या कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहा है उनके. 2023 से सिविल वॉर चल रहा है. विशियस पावर दैट ब्रोक द स्ट्रगल बिटवीन आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है. बिटवीन इट्स आर्मी एंड पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप. सॉरी, पैरामिलिट्री मतलब कि जो होते हैं ना संगठन जो अंदर ही अंदर पनपते हैं, जैसे नक्सली वगैरह जो होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो अंदर ही वो उनके आर्मी के साथ में कर रहे हैं अभी फाइट. रैपिड सपोर्ट फोर्स. Sudan, last year we have seen this in totally detail. After some month I will teach you what's going on in Sudan, everything from top to bottom, because it's also important. They are asking questions on Sudan also. Ukraine के Kiev, Donetsk, whatever, oh my god, so hard name. वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन, यहाँ पे वर्स्ट होती जा रही है क्योंकि रशिया के मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स अभी भी होते हैं. कौन सा रीजन है ये जो है ना बॉर्डर्ड बाय, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट. ओके, यू शुड नो द ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग गिवन हियर. लर्न कर लेना, जस्ट मग अप. sometime we have to do mug up, sometime we have to understand, see the map and learn the things. Okay, that okay, this is the map of this country, here it's given, here is given the river go like this, here is another country, here is okay. So like pictographic memory will create. Democratic Republic of Congo, here also there is war going on. It have facing a cycle of wars in east. ethnic wars है, मतलब कि दो communities यहाँ पे war कर रही है. इतूरी एंड नॉर्थ किवू रीजन, दिस स्ट्रगल फॉर द मिनरल वेल्थ. ये इनके पास में बहुत सारे मिनरल्स खनिज होते हैं, गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर, कोबाल्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव. फॉर दैट द एथनिक टेंशंस आर गोइंग ऑन. Congo river, Congo rainforest, cobalt, copper, gold, a lot of mines are there. So see this also in detail. Okay, I will off this now. So we have completed our IR portion. We will see security also, security and places in news.